Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. Today we'll be discussing Unit 3, जो एक poem है और इसका नाम है Try Again. Try Again के poet हैं W.E. Hickson, जिनका full name है William Edward Hickson. इनका brief introduction देख लेते हैं. Poet's brief biography. William Edward Hickson, born as W.E. Hickson, was a famous writer from United Kingdom who lived between January 7, 1803 and March 22, 1870. He is commonly known as W.E. Hickson and was a British educational writer. He was the author of Time and Faith and was the editor of the Westminster Review. Westminster Review एक British publication थी. He wrote an improved version of the British national anthem, यानी उनका कौमी तराना, whose verses were included in the version of God Save the King, published in the English hymnal. Hymnal क्या होता है? ये songs की book होती है. ये songs किसी को praise करने के लिए गाए जाते हैं, उसको hymn कहते हैं. So let's move on to the discussion of difficult words extracted from first stanza. First word is heed, which means pay attention to, यानी ध्यान देना. Second word is succeed, which means to attain success, which means कामयाबी हासिल करना. Attain का meaning होता है हासिल करना. Third word is courage, which means bravery. उर्दू words इसके लिए हिम्मत और बहादुरी हैं. Fourth word is appear, which means to become visible or noticeable, यानी जाहिर होना. Fifth word is persevere, which means to continue even while facing difficulty. उर्दू में इसे कहते हैं साबित कदम रहना. Sixth word is conquer, which means to defeat या overcome. And उर्दू में इसे कहेंगे फतह करना. Moving on to the paraphrasing of the first stanza. अब आप जब भी कोई भी stanza paraphrase करोगे आपने पहले reference देना है. और आप किस तरीके से reference दोगे? First you will write this line that this stanza has been taken from poem Try Again written by W.E. Hickson. इसमें आपका poem का और poet का reference आ जाता है. Then you will move on to the paraphrasing of the given stanza. So first stanza में क्या बात होती है? Poet says कि you are supposed to listen to this lesson with full attention. आपने इस lesson को पूरे ध्यान के साथ सुनना है. अब ये किस चीज़ का lesson है? ये hope का lesson है. उम्मीद एक lesson समझा रही है और ये lesson है कोशिश करते रहने का. You have to try again. Try again for what? Try again and again to achieve your goals. आपको तब तक कोशिश करनी है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते अपने गोल्स को अचीव करने में. इसके प्रोसेस में क्या होता है? इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप फर्स्ट ट्राई में सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन अगर आप फेल होते हो देन यू आर नॉट सपोज टू लूज होप. हिम्मत नहीं हारनी है, मायूस नहीं होना है, बल्कि सेम एनर्जी सेम इंथुजियाज्म के साथ दोबारा कोशिश करनी है. यू हैव टू परसिवियर. परसिवियर का मतलब डू नॉट स्टॉप, टू कंटिन्यू. अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना है. जब भी आप अपने फियर्स पे और अपने खौफ पर काबू पाएंगे, ओवरकम करेंगे उन्हें, एंड जब भी आप अपनी सक्सेस की तरफ मूव ऑन करेंगे. सो इसका प्रोसेस क्या है कि अगर आप एक बार गिरते हो, राइज अप विद द सेम विल. लिफ्ट अप योर सेल्फ. अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें, अपने सेल्फ बिलीफ को सस्टेन रखें, एंड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन. थैंक यू.